So I'll be sharing the screen. Sorry. And this is my screen. So my problem, last class problem was I had a pseudo first order reaction and it was the hydrolysis of ester and I had these datas given. So I had time in second and I had ester का concentration in mole liter inverse. So basically I had 0, I had 30, I had 60 and I had 90. And this is 0.55, 0.31, 0.17, 0.085. So Kai was asked to find the average rate of reaction between 30 to 60 seconds, so which I had already made you solve. The second portion was calculate the pseudo first order rate constant. Calculate the pseudo first order rate constant. Now, as it is given a first order reaction, we can directly put the formula K is equal to 2.303 by T log K0 by A. Now, what is A0? K0 is initial concentration. Initial means at time T is equal to 0. And what is A? That is concentration at time T. So from the given data in the table, this is supposed to be my initial concentration because this is my concentration at time T. Now when I apply this formula K, I will have to find out when T is equal to 30, I will have to find out K1, which is 2.303 by 30 log K0 will be always 0.55 and concentration of A at T is equal to 30 from the table is 0.31. So 0.31. So this is going to have a value. Next at T is equal to 60, K2 is equal to 2.303 by 60 log. It is always my same. It is the initial concentration. So this is 0.55. And what is the concentration of A at 60? 0.17. So this is 0.17. We get another value. When T is equal to 90, I have K3 which is 2.303 by 90 log 0.55 by this is 0.085. I get another value. Now these are the values of rate constant at different temperatures. I have to find out what is the pseudo first order reaction rate. So my pseudo first order reaction rate can be equal to K1 plus K2 plus K3 by 3. So this is how you have to find out the reaction rate constant for any pseudo first order reactions. For any problems जहां पर ऐसा टेबल दिया रहेगा. तो ये लास्ट क्लास था, मतलब ये लास्ट क्लास का लास्ट पोर्शन था. तो बहुत बहुत क्लियर नहीं हुआ था इसलिए मैं आज रिपीट कर दिया. तो आई होप इट इज क्लियर नाउ. Yes, sir. Okay. Now we will solve some of the NCERT problems now and then after some time we will start solving problems for NEET and JEE. Okay. तो you will have to write it down along with me. इसका recording भी हो रहा है, but if you write it down along with me, it will be beneficial for you, right? So let me go to the next. Let me go to the excellent next page. So here I have my next problem.
My next problem states a reaction is in first order. Write it down. A reaction is in first order with respect to A and second order with respect to B. So write the differential rate equation. How is the rate affected when concentration of B is increased 3 times, and how is the rate affected when both A and B are doubled. So this is my problem. Now what is my first? Given a reaction is in first order with respect to A and second order with respect to B. Nothing to panic. What is order? Order is the coefficient which is raised to the power of the reactant concentration. How many reactants we have? Two. One is A and one is B. So I can write rate is equal to K, which is a rate constant, concentration of A to the power 1 and concentration of B to the power 2. Is this clear? Is this step clear? Yes, sir. So whenever you will be asked, write the differential rate equation, you have to just replace rate as dx dt is equal to K A into B square. Okay. Now the second part. How is the rate of reaction affected when the concentration is increased 3 times? So what is rate? Rate is equal to K into A into B square. Now when B is increased 3 times, mane in the new case B will be equal to 3B. In the new case B will be replaced by 3B. So replace B as 3B in the above rate equation. Rate is equal to K A 3B whole square. 3 square is 9. So 9 into K A B square. Now you can see this is the original rate and it is multiplied by 9 in order to find the new rate. So I can say my rate is increased by 9 times. Clear? Hello, is it clear? Yes, sir. Okay, दोनों को? Yes, sir. Good. So can you do the third portion? When both A and B are double. For the third portion, you have to replace A as 2A and you have to replace B as 2B. And then you have to put these in the reaction K A into B square. Do it.
Yes, the rate will become 8 times. Good. Has both of you done it? Yes, sir. Okay. आप लोग माइक म्यूट करके भी बोल सकते हो, लाइक अनम्यूट करके बोल सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ लाइक इंटरेक्शन इज नीडेड। ओके, नेक्स्ट इज वी हैव अ टेबल, राइट इट डाउन। ये बस कभी हम लोग जो प्रॉब्लम किया उसका एकदम ऑपोजिट। हम लोग को एक टेबल दिया है वेयर वी आर गिवन द कंसंट्रेशन ऑफ ए, वी आर गिवन द कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड वी आर गिविंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। वी हैव टू find the order of the entire reaction with respect to A and B. So what do we have to find out? We have to find out if the rate is written as K as A to the power alpha and B to the power beta. Then we have to find out what is alpha and what is beta. So how to find it? Very simple. We will substitute each of these three values and we will find three equations. So substituting the values, we have rate, which is let us say first reaction is equal to 5.07 into 10 to the power minus 5 is equal to K. Corresponding to this rate, what is the rate concentration of A? 0.20 to the power alpha. B is 0.30 to the power beta. This is equation number 1. Now if I take the second rate, which is again the same, 5.07 into 10 to the power minus 5 is equal to K. This is 0.20 to the power alpha. This is 0.10 to the power beta. And corresponding to the third equation, rate is equal to 1.43 into 10 to the power minus 4 is equal to K. 0.40 to the power alpha, 0.05 to the power beta. So these are the three equations that are being obtained by substituting all the values in the given reaction rate expression. Now you have to solve them. You have to solve them for alpha and beta. So can you solve them? Okay, first write down the equations. I will help you out. सारे इक्वेशन लिख लो and say me after you have written it down. Be fast.
completed? Have you written it down? Okay. Now divide 1 by 2, which means divide the equation 1 by the equation 2. What do we get? If I go to the next page, dividing equation 1 by 2, we get this is 5.07 into 10 to the power minus 5 by 5.07 into 10 to the power minus 5 is equal to k cancel out, which is equal to 0.20 alpha, 0.30 beta by 0.20 alpha, 0.3 sorry 0.10 0.10 beta. Now this cancels out, this becomes 1. This is 1 is equal to 0.30 by 0.10 to the power beta. Now anything to the power 0 is equal to 1. Therefore beta is equal to 0. When I say beta is equal to 0, next is divide 2 and 3. Divide 2 and 3. So what we get? R2 is 5.07 into 10 to the power minus 5. R3 is 1.43 into 10 to the power minus 4 is equal to k gets cancelled out. R2 is equal to 0.20 alpha, 0.10 beta, and this is equal to 0.40 alpha, 0.05 beta. Now put beta is equal to 0, so this becomes 1, this becomes 1, so this cancels. So this is equal to 0.20 by 0.40 to the power alpha, and dividing this will give you something like 2.826. If you divide this, you will get 2.826. Now this is basically, sorry, sorry, this is basically 1 by 2.826. Now, or I can say 2.826 is equal to 2 to the power alpha, because if you reverse it, 0.4 by 0.2 is 2. Now you need to find out alpha. How to find out alpha you do not know. So take log on both sides. Log 2.826 is equal to alpha log 2, or alpha is equal to log 2.826 by log 2. Now log 2 has a default value of 0.3010. Log 2 has a default value of 0.3010. And log 2.824 from table is equal to 0.4511. Log tables explanation later. Explanation. We'll do it today. So alpha is equal to this. If you divide this, you will basically get alpha is equal to 1.5. You will basically get alpha is equal to 1.5. Therefore, I can write the rate of the reaction as K, A to the power 1.5, B to the power 0. B to the power 0. So I can say the reaction is of the order of 1.5 with respect to reactant A, and the order of 0 with respect to reactant B. If you have any doubt, kindly ask me and clarify. And if you have understood, write yes, complete the sum, and we'll go to the next. Okay, Aishwarya has said yes. Jigyasa, any doubts? Hello, any doubts? No, sir, no doubt. Okay. Clear, right? Yes, sir.
Next, go to the next problem. This problem is basically dealing with the calculation of half-life period. So you have to find out, calculate the half-life for a first order reaction from given rate constants. Number 1, 200 second inverse. Number 2, 2-minute inverse. So you might be thinking how to do this problem. We have a very simple from हम लोग के यहाँ दिया है first order reaction. So we have a very simple formula for first order reaction, that is T half is equal to 0.693 by K. Now for K is equal to 200 second inverse, T half is equal to 0.693 by 200 second, and for 2-minute inverse, T half is equal to 0.693 by 2 minutes. So you have to just solve it and find the value of second, and you have to just solve it and find the value of minute. Is it clear? Is the problem clear? Hello? Yes, sir. So next. Next, before I start, before I start the next problem, there is something which I want to teach you, because that is something which I forgot. I didn't forget. I missed the last class. That is, in physics, there is a very important concept which comes under the subject of chemical kinetics, and that concept is very important. It is a very famous type of first order reactions, and we should learn it. That topic is particularly called radioactivity. So we would like to spend very little time on this radioactivity, and then we will practice sums regarding to radioactivity. Yeah. So radioactivity, it's a first order reaction. What does radioactivity means? Radioactivity is a process where a substance, when kept isolated for a large period of time, if it gives away radiations and it itself changes to a new object. For example, a object X can give away radiations and change to a new object Y. This process of giving out radiations and changing to a new object is called radioactivity, and each and every process which undergoes this
this radioactivity are called radioactive substances. Now when a compound changes to when a compound changes to a new compound, first step is it loses itself. तो पहला बात तो ये अपने आप को खो लेता है. Okay, so the process of converting the element X to a new element Y is basically called a radioactive decay. So all radioactive decays are basically first order reactions. So if I take a radioactive substance A which decays into another radioactive substance B, and if Na0 is the initial amount of radioactive substance present, this is initial concentration, then the total amount of radioactive substance which is present after a particular time t, dNA by dt is proportional to Na, which means that amount of the rate of decay is proportional to the concentration of concentration of the radioactive substance present, which means during the initial stages my radioactive substance had a huge concentration, so my decay was fast. After some time, when the concentration of my radioactive substance decreases, so the rate of decay also decreases. In order to remove this proportionality reaction, we have dNA dt is equal to lambda into Na, where lambda is called the disintegration constant. Lambda stands for disintegration constant. Why it is called disintegration? Because the process of breaking up of a substance and forming a new substance is also called as disintegration. So it is also called the disintegration. It is also called a decay constant. So because I said it follows the first order kinetics, so ln n0 by n t is equal to lambda into t. Now lambda has the same behavior as the reaction rate constant K that we have discussed so far. What is N0? It is the initial concentration. What is Nt? It is the concentration after time t. Now if I write it in exponential form, N0 by Nt is equal to e to the power lambda t, or Nt by N0 is equal to e to the power minus lambda t, or Nt is equal to N0 e to the power minus lambda t. So this is something which is called disintegration formula, where Nt, I do not know what is the amount of radioactive substance that will be present after a particular time. I only know the disintegration constant and I only know the initial amount that I have taken. So I can easily find out how much radioactive substance will be present after a particular time period. Now because it follows first order kinetics, we also have a half-life which is given as 0.693 by lambda, because in this case we do not have K, we have lambda as a disintegration constant, and we also have an average decay time which is 1 by lambda. So यहाँ पर I get a new time which is called 1 by lambda. 1 by lambda is called the average decay time or the average life period of a radioactive substance, and T half का definition same रहता है. It is the time after which the amount of radioactive substance has reduced to exactly half of its initial value. So this is what radioactivity is all about. Now let's do some sums on it. Acha, if this meeting ends, so please rejoin in the same link, okay? Like you know this happens, right? ये Zoom का है तो 40 minutes बाद ये end हो जाएगा, तो आप लोग वापस इसी link में add कर लेना, okay? Yes, sir. Yeah. So is radioactivity clear? Just a brief introduction, इससे ज़्यादा चाहिए नहीं. Is radioactivity understood? कैसे क्या होता है? ये बहुत डीपली तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे. फिजिक्स बुक 2 का चैप्टर नंबर सेकंड लास्ट चैप्टर,
बट फिलहाल यही चाहिए, ठीक है? ओके, हेलो, गिव मी यस नो. Yes, sir. ओके, सो लेट्स गो टू द प्रॉब्लम ऑन रेडियोएक्टिविटी. तो राइट इट डाउन. द हाफ लाइफ पीरियड of radioactive decay for a 14C carbon isotope is 5730 years. 5730 years is the half life. And sample of radioactive substance, a sample of radioactive wood has only 80% of the 14C in a living tree. Estimate the age of the sample. बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है एंड बहुत रियल लाइफ प्रॉब्लम है. क्वेश्चन ध्यान से सुनो. मेरे पास एक सैंपल है, मेरे पास एक लकड़ी का सैंपल है विच इज रेडियोएक्टिव इन नेचर, एंड उसको मैं अगर कार्बन डेटिंग एंड प्रोसेस है, कार्बन डेटिंग प्रोसेस इज बेसिकली यूज्ड टू स्टडी फॉसिल्स. वो प्रोसेस से मेरे को पता चला कि ओरिजिनल ट्री में जितना 14C कार्बन आइसोटोप था उसका 80% फिलहाल मेरे सैंपल में है. मतलब 20% क्वालिटी डिसइंटीग्रेट कर चुका है. एंड मेरे को पता है 14C को डिसइंटीग्रेट करने के लिए इसका हाफ लाइफ पीरियड इज 5730 इयर्स. मतलब जितना कंपोनेंट ऑफ 14C है उसका एग्जैक्टली 50% होने के लिए मेरे को 5730 इयर्स चाहिए. तो कभी भी सिर्फ 20% ही डिसइंटीग्रेट हुआ है. तो सवाल पूछा है कि हम लोग को बोलना है कि ये सैंपल कितना साल या कितना महीना पुराना है. तो हम लोग को पहले क्या करना है, हम लोग को पहले मेरे को रेडियोएक्टिव जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो निकालना है, लैम्डा, व्हिच इज 0.693 बाय टी हाफ, बिकॉज मेरा टी हाफ दे दिया 5730 ईयर. तो इट इज 0.693 बाय 5730 ईयर इनवर्स. तो दिस इज माय रेडियोएक्टिव कांस्टेंट का ये हो गया मेरा फॉर्मूला यूनिट. उसके बाद यू हैव टू फाइंड एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल. हाउ टू फाइंड आउट द एज ऑफ द सैंपल? हमको पता होना चाहिए कि कितना टाइम के बाद मेरा 80% कार्बन सी बाकी है. अगर मेरे को पता चले कि फॉर एग्जांपल 2000 साल के बाद मेरा ये सैंपल में जितना 14C था 2000 साल के बाद उसका 80% 14C बाकी है, सो आई कैन से 2000 years इज द लाइफ स्पैन ऑफ दिस सैंपल. इसको ध्यान से समझो. अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक सैंपल है एंड आफ्टर 2000 years मेरे पास वही सैंपल में जो ओरिजिनल 14C था उसका 80% 14C अभी बाकी है, तो कैन आई से 2000 इज माय टोटल एज ऑफ द सैंपल? क्या मैं बोल सकता हूं ये बात? हेलो, hello, give me a yes or no please. Yes, sir. Okay, so if yes is the answer, then I can see 2 equal to 2.303 by lambda. This is a simple first order equation. Log initial concentration by concentration at time t. So what was the initial concentration? I will take 100%. What is concentration at time t? It's given 80%. What is lambda? We have already found out. Find out t. This is 2.303 by 0.693 into 5730 log of 100 by 80. If you solve it, you will have 1845 years. So my age of the sample is 1845 years. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the class will be ending soon. Please leave the class and rejoin in the same link. Please leave the class and rejoin in the same link.
Yeah, the rate constant of a first order reaction is 60 second inverse. How much time will it take to reduce the initial concentration to 1 by 16 value? Which means there is a first order reaction with a rate constant of 60 per second. How much time will it take so that the amount of reactant remaining is basically 1 by 16 of the original value? So there are two ways of doing this. I will show you both the ways. One way is that you have to follow for CBSE. Another way is a shortcut which you can use for competitive exams. So first is CBSE method. I have K is equal to 60 second inverse. R0 is the initial concentration, and I have R is equal to initial K 1 by 16 time, R0 by 16. So what you have to do, you have to find out time. Seedha use the first order reaction, 2 by 303 by K log R0 by R equal to 2.303 by 16 log R0 by R0 by 16. This 16 goes up. 16 is 2 to the power 4. So 2.303 by 60 log 2 to the power 4, which is equal to 4 log 2. So 2.203 by 60 into 4 log 2. My answer comes 4.62 into 10 to the power minus 2 seconds. So this is my very basic method जो CBSE वालों को चाहिए, राइट? CBSE वालों ऐसा स्ट्रेट कट मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, वो लोग चेक करेगा, वो लोग हम लोग को नंबर देगा. बट दिस विल टेक टाइम, दिस विल टेक टाइम. तो इससे भी देयर इज अ वेरी शॉर्टकट, बट इट कैन ओनली बी डन इफ माय गिवन वैल्यू is a multiple of 4, sorry, multiple of 2. This can only be done if my given value is a power of 2. ये अगर 1 by 17 होता या 1 by 18 होता, मैं जो प्रोसेस अभी बोलने वाला हूं, that I cannot apply. I can only apply if my given remaining value is a power of 2. So let me show. Have you written this process down? Can I go to the next page? Yes, sir. दोनों? Yes, sir. Okay. Now, method 2. I hate green. I'll give it a pink color. Method 2. Method 2 is, there is a formula. In general, the amount of substance left after n half-lives. Now what do you mean by n half-lives? N half-life is, suppose I have 100 rupees pocket money, right? So 100 से 50 होने के लिए मान लो मेरे को लगा 4 days. अब मेरे पास कितना है? 50. 50 से मेरे को 25 होने के लिए लगा और भी 4 days. अब मेरे पास कितना है? 25. 25 से 12.5 होने में लगा 4 days. So कितना 4 days लग रहा है? 1, 2, 3. This is a half life. This is a half life. This is a half life. How many half life we have? 3. तो 100 से 12.5 कितना टाइम में आया? 3 half lives. 100 से 12.5 में आया 3 half lives. तो इसलिए मैं बोला कि in general the amount of substance which is remaining after n half life
is basically R is equal to R0 by 2 to the power n, जो कि मेरे को दिया है R0 by 16. So 2 to the power n is equal to 16 और n is equal to 4. तो ओरिजिनल का 1 by 16 होने के लिए आई हैव 4 हाफ लाइफ्स. तो मेरे को पहले क्या कैलकुलेट करना है, मेरे को पहले 16 दिया है मतलब 2 to the power 4. तो व्हाट इज द टाइम टेकन, विच इज n into t half, which is n into t half. अब t half कैसा है, n मेरा 4 है, t half क्या है 0.693 by 60. इसको 15 का दो तो खत्म 0.693 by 15. इसमें कैलकुलेशन भी तुम्हारा कम हुआ, इसमें स्टेप्स भी तुम्हारा कम लगा, ये तुम जल्दी कर भी पाओगे. बट दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस इज एन पावर ऑफ 2. ठीक है, हैव यू गॉट इट? Yes, sir. Okay, I'll give you a homework. I'll give you a homework. You have to show that for a first order reaction, इसको ट्राई करना, the time required for 99% completion of a reaction is twice the time required to complete 90% of the reaction. ठीक है, इसका मैं एक डेटा दे रहा हूं, log t is equal to 0.3010. दिस इज, ये डेटा मैं तुमको दे रहा हूं. यू हैव टू प्रूव इट एंड ये चीज क्लास खत्म होने के बाद करके मेरे को आज ही व्हाट्सएप करना विद द आंसर्स, दिस आंसर्स. ठीक है, राइट इट डाउन, राइट द प्रॉब्लम. इज वेरी सिंपल. मैं तो इतना प्रॉब्लम करवाया, समझाया. आई होप सारे प्रॉब्लम्स तुम लोग को, अच्छा वेरी फ्रैंकली बताओ, सारे प्रॉब्लम्स जो कभी तक मैं किया क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मेरे को हाँ में जोश नहीं लग रहा है. अब ऐसा मत बोलना कि नेक्स्ट में जिस दिन होमवर्क मांगूंगा उस दिन मत बोलना कि सर डाउट था. देखो, बोलने से दिक्कत कुछ नहीं है, तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज ऑलरेडी 1 घंटा लगा रहे हो ना, तो सीखोगे. जो डाउट है यहीं क्लियर कर लो. पक्का कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. क्लास अच्छा लग रहा है Yes, sir. या थोड़ा बोरिंग है? सर अच्छा लग रहा है. अच्छा, ठीक. खैर मेरे को पता है थोड़ा बोरिंग है, बट तुम लोग बोल नहीं चाह रहे हो बिकॉज सर को खराब लगे, विच इज ऑल्सो अ थिंग आई रेस्पेक्ट. बट ठीक है, इट्स ओके. केमिस्ट्री आर सपोज टू बी बोरिंग. केमिस्ट्री विल बी इंटरेस्टिंग व्हेन, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. अच्छा, तो अभी तक Yes, sir. वी हैव सॉल्व प्रॉब्लम्स जहां पर मेरे को कंसेंट्रेशन दिया है, राइट? जहां पर मेरे को कंसेंट्रेशन दिया था, इनिशियल कंसेंट्रेशन, फाइनल कंसेंट्रेशन. अब मेरे को कंसेंट्रेशन नहीं दिया है, अब मेरे को प्रेशर दिया है, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर. तो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सारे चीजें हैं, बट विद रेस्पेक्ट टू कंसेंट्रेशन. तो अगर प्रेशर रिलेटेड आए तो मैं इसको कैसे करूं? अगर मेरे को प्रेशर के बेसिस में इसको कैलकुलेट करना होगा तो हाउ विल आई डू इट? दिस इज दिस प्रॉब्लम. तो ड्रॉ द टेबल. बहुत छोटा टेबल है. This is experiment. This is time per second.
total pressure in ATM. Experiment number 1, 2, 0, 0.5, 100, 0.6. And what is my reaction? My reaction is SO2Cl2 gives SO2 plus Cl2. बाकी मेरे को कुछ नहीं दिया, तो obviously I can see that it is a first order reaction, right? Obviously I can see that it is a first order reaction. अब हम लोग को कैसे पता चला? वी डू नॉट हैव इनिशियल कंसेंट्रेशन एंड प्रेशर का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इज कंसेंट्रेशन का क्या है? रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन है, वो खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बट प्रेशर कभी खत्म नहीं होता है ना। प्रेशर एक बीकर में जो प्रेशर है वो प्रोडक्ट जब फॉर्म होगा शायद प्रेशर लगभग सेम ही रहेगा। देखो ना तुम, 0 मतलब इनिशियल प्रेशर, 100 माइनस फाइनल प्रेशर कितना बड़ा है? 0.1, मतलब प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली सेम। तो मेरे को अगर यहीं पर मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन निकलना है तो कैसे करूं मैं? और मेरे को यहां पर मेंशन किया कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 0.65 atm, मतलब मेरा रिएक्शन खत्म होने के बाद जो कंटेनर में रिएक्शन हो रहा था उसका टोटल प्रेशर इज 0.65 atm। तो यहां पर मेरे को थोड़ा क्लास 11 का नॉलेज लगाना होगा, मैं दिखा दे रहा हूं। तो फर्स्ट आई हैव टू राइट द इक्वेशन SO2Cl2G give SO2G plus Cl2G. Now let initial pressure be P0. तो इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट में होगा, प्रोडक्ट में नहीं होगा, बिकॉज इनिशियल प्रेशर कब है? व्हेन T is equal to 0, मतलब एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं किया तो प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होगा। तो माय इनिशियल प्रेशर विल जस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन द रिएक्टेंट साइड आफ्टर एट टाइम t। मान लो एट टाइम t P0 का प्रेशर स्मॉल p रिड्यूस हुआ है, बिकॉज ये रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, तो P0 का प्रेशर स्मॉल p रिड्यूस हुआ है। तो बाय स्टोइकोमेट्री जितना प्रेशर रिएक्टेंट में रिड्यूस होगा उतना प्रेशर प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला स्टेप समझा सब? बाय स्टोइकोमेट्री सब 1:1 रेशियो में है, तो यहां से जितना घटेगा यहीं पर वही चीज यहां मेरे को डिस्प्ले होगा। समझ में है? हेलो? यस सर। नहीं समझ में? और एक बार बोलूं? यस सर। हाँ बोला ना, बोल दो कि नहीं समझ में आया। तो लेट अस अज्यूम दैट एट टाइम t इक्वल टू 0 माय इनिशियल प्रेशर इज P0। अब जब टाइम t इक्वल टू 0 में क्या है? It is only reactants, no product has been formed because the experiment has not yet started. So I can say the initial pressure is just reflected on the reactant side. Now let after time t, P amount of pressure is lost on the reactant side. Why is pressure lost on the reactant side? Because the reactants has changed to products. So if P amount of pressure is lost on the reactant side, I can assume the same amount of pressure has built up on the product side. हाँ कि ना? फॉर एग्जाम्पल तुम इसको ऐसे सोच सकते हो, मान लो ये दो बीकर है, राइट? बीकर में यहां पर फुल पानी है, यहां पर एक स्टॉप कॉक है। वंस यू ओपन दिस आफ्टर टाइम t, ये वाटर लेवल अगर यहां तक आए तो इसका वाटर लेवल भी सेम लेवल तक बढ़ेगा। मंजूर है? यस सर। लॉजिक समझ में है? तो वाटर अगर फ्लो कर रहा है, यहां पर वाटर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यहां पर जितना प्रेशर डिक्रीज होगा यहां पर उतना इक्विवेलेंट प्रेशर बिल्डअप होगा, राइट? यस सर। ओके, तो इसलिए व्हेन आई सेड दैट आफ्टर टाइम t, लेट मेरा रिएक्टेंट साइड में P अमाउंट ऑफ प्रेशर ड्रॉप हुआ, तो सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर मेरा प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट होगा। अब दोनों में सेम क्यों हो रहा है? बिकॉज ये स्टोइकोमेट्रिक रेशियो 1:1:1 में है। तब मैं क्या करूंगा? व्हाट इज द टोटल प्रेशर? टोटल प्रेशर इज दिस प्लस दिस
प्लस दिस, तो P0 माइनस P प्लस P प्लस P, कैंसिल करके इट इज P0 प्लस P. तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P0 प्लस P. Now total pressure at, this is the pressure at time t. This is the pressure at time t. So Pt is equal to P0 plus P. And what is P? P is equal to Pt minus P0. Now if I use the first order reaction, तो I can say K is equal to 2.303 by T log. यहां पर मेरा इनिशियल प्रेशर आएगा और यहां पर क्या आएगा, प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी. तो प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी क्या है, P0 माइनस P. तो यहां पर मेरा आया P0 माइनस P. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? Pt माइनस P0 पुट कर दो, 2.303 by T log P0 by P0 माइनस Pt माइनस P0. ये सॉल्व करके आएगा 2.303 by T log P0 by 2P0 minus Pt. Now what is P0? P0 तुम्हारे पास है 0.5, right? And what is Pt? Pt भी तुमको दिया है 0.65. Find out 2P0 minus Pt. निकल जाएगा. अब ये अगर निकल गया, टाइम कितना लोगे तुम? You take t is equal to 100. You take t is equal to 100. Right? So I can say 2.303 by 100 log. What is initial pressure? P0 is, I have 0.5 minus 2 into 0.5 minus Pt. What is pressure at 100? 0.6. हम लोग 0.65 यूज करने का अभी जरूरत नहीं है, नो जरूरत, हम लोग वो बाद में करेंगे. तो दिस इज 0.6. इसको तुम अगर सॉल्व करोगे, you will get the value of K. You'll get the value of K. यहां तक क्लियर है? Is it clear till this level? नहीं है तो बोलो, मैं और एक बार बोलूंगा, बट ये क्लियर होना चाहिए. सर क्लियर है. पक्का? यस सर. ओके गुड. तो ये मेरा क्या निकला? दिस इज माई रिएक्शन रेट. अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए रेट ऑफ द रिएक्शन. राइट, मेरे को चाहिए रेट ऑफ द रिएक्शन. तो मैं वेरी सिंपल प्रोसेस एक यहां यूज कर सकता हूं विदाउट एनी फॉर्मूला, लाइक विदाउट एनी टेंशन. रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2. मैं लिख सकता हूं ऐसा? यस सर. लिख सकता हूं. अब प्रेशर ऑफ SO2Cl2 कितना होगा? जितना ये टाइम में जितना रिएक्टेंट बाकी है, मतलब जितना रिएक्टेंट यूज हुआ है, उतना मेरा प्रेशर होगा. सेम एज लाइक कंसंट्रेशन वाला, जितना रिएक्टेंट खत्म होगा उतना ही मेरा प्रोडक्ट होगा. तो यहां पर भी जितना प्रेशर लॉस होगा उतना ही मेरा प्रेशर गेन होगा. राइट? अब एट टाइम टी व्हाट इज द प्रेशर ऑफ SO2Cl2? मैं ऑलरेडी लास्ट में निकाला 2P0 माइनस Pt. हम लोग अभी किए, K का वैल्यू निकला 2 इंटू 0.5. यहां पर Pt का वैल्यू हम लोग लेंगे 0.65, बिकॉज हम लोग ये फाइनल कंडीशन ले रहे हैं. तो इसको निकालो, तुमको रेट ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगा. क्लियर? यस सर. पक्का?
यस सर। तो मैं अगर कुछ होमवर्क दूंगा करके लाओगे नेक्स्ट क्लास? जी। अच्छा, बाकी लोग का तो मैं शेयरिंग बंद कर रहा हूँ एंड मैं उसके बाद क्लास रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। एक सेकंड।